Welcome to my class. I am Rekha Singhal. So today's topic is pronouns. In Hindi you call it सर्वनाम. Okay. So beta, first of all I would like to say one thing. To understand pronouns you should have a very clear idea about the nouns. अगर आपको nouns अच्छे से आते हैं तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंस वेरी इजीली. अगर आपको नाउन्स में डाउट है तो इट इज़ बेटर आई विल सजेस्ट यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ विच आई हैड मेड फॉर यू ऑन द टॉपिक नाउन्स एंड देन यू शुड वॉच दिस वीडियो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, ऑलराइट, टू बिगिन विद लेट अस बिगिन विद एग्जाम्पल कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन. ओके, आई कैन कॉल इट द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन. Okay, substitute of noun means the words which can be used in place of a noun. ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा की जगह पर यूज कर सकते हैं they are called pronouns. Okay, for example, Ramesh is a good boy. Ramesh lives in sector 15. Ramesh's mother is a teacher. Ramesh's father is a doctor. Ramesh's mother and father go for a walk every day and so on. Okay, now the question is why should I take the name of Ramesh again and again? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि whatever I want to convey वो मैसेज भी कन्वे हो जाए and the sense of the sentence should remain same. Okay, so let us say those sentences again. I can say these sentences in this way also. Ramesh is a good boy. He lives in sector 15. His mother is a teacher. His father is a doctor. They go for a walk every day. So now I am using the word he, his or they. The sense of the sentence remains the same. There is no change in the sense of the sentence. Whatever the message I want to convey, I have conveyed it in a very nice way. So जिन वर्ड्स को मैंने वहाँ से रिप्लेस कर दिया दे आर नाउन्स, और जिनको मैंने वहाँ पर फिट किया है he, his or they are called pronouns. So in simple language we can say that pronouns, they can be used as a substitute of nouns. Pronouns are the words which are used in place of nouns. They do not change the sense of the sentence. Okay, they avoid repetition of the words. They help us avoid repetition of the words. If I give you another example, so I can say this, Rama and Shama, they are going to market. In place of Rama and Shama, I can say they are going to market. So they is a word which I have used for two nouns, Rama and Shama. So they is a pronoun. Okay, Mr. Bhargav is a scholar. He is a scholar. I can use the word he for Mr. Bhargav. So he is a pronoun and he is used for Mr. Bhargav. So Mr. Bhargav is a noun and he is a pronoun. Okay, तो pronouns को हम nouns की जगह use करते हैं. This is the first basic thing you need to know. Okay, so many words are there. I, you, they, he, she, it, mine, our, yours, hers, his. So, but the thing is that you need to know कि which type of pronoun they are. There are so many pronouns but they all fall under different categories. So we will read in detail the kinds of the pronouns, the types of the pronouns. सर्वनाम कितनी प्रकार के होते हैं. Okay, you understand in English this topic, then you would be able to understand in Hindi also. Because only language difference would be there. Topic remains the same. So now kinds of pronouns. In total, there are 7 types of pronouns. Number 1, personal pronoun. Number 2, possessive pronouns. 3, reflexive या emphasizing pronouns. They are also called intensive pronouns. Number 4 is indefinite pronouns. Then demonstrative pronouns, interrogative pronouns, and last, relative pronouns. I will explain all these pronouns in detail one by one. Okay, they are very easy to understand if you pay attention to it. Okay, number 1, personal pronoun means व्यक्तिवाचक सर्वनाम. ऑलराइट, जैसा कि आपको नाम बता रहा है पर्सन, जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है. पर्सन मीन्स ही, शी, इट, दे, वी. रमेश इज गोइंग टू मार्केट, तो रमेश के लिए आई एम यूजिंग द वर्ड ही, तो ही रमेश इज ए पर्सन. तो ही जो हो गया वो क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया. दे,
राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट. राम और श्याम कौन है? पर्सन है ना. आई एम यूजिंग दे फॉर बोथ ऑफ देम. सो दे इज अ पर्सनल प्रोनाउन. Rama is going to market, तो I can say she is going to market. I am using the word she for Rama. Rama is a noun और she जो है वो noun को replace कर रहा है, तो she क्या हो गया? pronoun. So और Rama is a person. It is personal pronoun. Hope personal pronoun is clear to all of you. Now there are forms. Personal pronouns की 3 forms होती हैं. First person, second person and third person. In first person we talk about the speaker. द पर्सन हु इज स्पीकिंग. जैसे कि अब आपसे मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग, आई और वी, तो ये क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन में whom वी आर टॉकिंग, हम जिससे बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग टू यू, तो यू कौन हो गए? यू आर सेकेंड पर्सन. ठीक है ना. रेखा मैम इज फर्स्ट पर्सन एंड यू ऑल स्टूडेंट्स आर सेकेंड पर्सन फॉर मी, राइट. एंड थर्ड पर्सन, सपोज आई एम telling you, you know, last year I had few students who were very intelligent. So now I am telling you about few students who were with me last year. तो I am telling you about somebody else ना, तो वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन. मैं किसी और की बात कर रही हूँ. होप इट इज़ क्लियर. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन में कौन से वर्ड्स आते हैं? आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, एटसेट्रा. सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स. एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, हिज, हिम, हर, इट, दे, दियर, दियर्स एंड सो ऑन. Hope it is clear to you. Now we will talk about the types of the personal pronouns. So personal pronouns can be categorized into 2 types. Subjective pronouns and objective pronouns. It is very important and please make this concept very clear to you. It is a very important concept. Okay, now subjective as a name is telling to us about the subject, and objective जिसमें हम object के बारे में बात करते हैं. In one sentence there can be a subject or there can be a object also. In subjective pronouns the words they act as a subject. For example, he, she, they, we, I, all these words can be used as subjects. For example, राम गोज़ टू मार्केट, तो राम बाज़ार जाता है. आई कैन से दिस वर्ड ना, ही गोज़ टू मार्केट, तो आई एम यूजिंग ही फॉर राम, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, इसीलिए इट इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब राम एंड श्याम गो टू मार्केट, तो आई एम दे गो टू मार्केट. आई कैन यूज़ द वर्ड दे फॉर राम एंड श्याम, तो दे क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया. Is it clear? Now if I talk about the objective pronoun, the words act as a object in a sentence. For example, all the words which are subjective pronouns जैसे he, she, it, इन्हीं से objective pronouns बनता है. जैसे he से him, she से her, they, them, I, me, we, us, तो क्या हो गया? objective pronouns बन गए. Let us use them in the sentence. For example, she gave me 100 rupees. तो she is a subjective pronoun क्योंकि she is acting as a subject here. हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में आया है और she को हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो she is a subjective pronoun. और उसने किसको दिया 100 रुपीज़? me. तो यहाँ पर me की जगह I तो नहीं लगा ना, me लगाए ना. me जो है वो I की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सो me क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. Is it clear to all of you? This way the objective pronoun of he would be him, she का her, they, them, we, us, I, me. Is it clear to all of you? So subjective pronouns and objective pronouns are very important. Now number 2, possessive pronouns. possessive का मतलब as a name is indicating, possession शो करना, अपना right शो करना, ownership शो करना. When sometimes you say ना कि this thing is mine, यह मेरा है, तो यू आर शोइंग योर पोजेशन. आप अपना अधिकार उस पर क्लेम कर रहे हो ना कि वो चीज़ आपसे बिलोंग करती है, तो इट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन. दिस प्रोनाउन टेल्स अस दैट हु इज़ द ऑनर ऑफ ए थिंग. सिंपल, यह घर मेरा है, यह किताब तुम्हारी है, वह उसका है, यह मेरा भाई है. मीन्स मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, पोजेशन शो कर रहे हैं ना, तो पोजेसिव प्रोनाउन हो गया. ऑलराइट, तो पोजेसिव प्रोनाउंस की भी क्या होती है? 2 कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. ओके, सो कैटेगरी 1 में हम विच वर्ड्स वी टेक? हिज, हर, माई, देयर, योर एंड आर. एंड कैटेगरी 2 we use the words his,
hers, mine, theirs, yours, ours. Now see the difference is that her की जगह hers, their की जगह theirs, your का yours, our का ours, his का his ही रहता है, it remains same, and my का mine. So we can say most of them they are having the plural forms of the words which we have taken in first category. But one very important thing is that beta remember कि never we use apostrophe form. Like अगर वहाँ पर hers है HERS, simple HERS we will write, we will not write HER apostrophe S. Apostrophe you know now, ऊपर एक कॉमा लगा देना, तो we cannot use those forms in possessive pronouns. This thing you have to keep it in your mind. Okay, now beta I am giving you one example to understand that. See, जैसे आप किसी को बता रहे हो कि यह मेरा घर है, तो आपने क्या किया, मेरा तो प्रोनाउन है, आपने प्रोनाउन के साथ आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के साथ आपने वो चीज़ लगा दी जिस पे आप अपना पोजेशन शो कर रहे हैं, घर पे पोजेशन शो कर रहे हैं ना, यह मेरा घर है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज माई हाउस. वेरी सिंपल, माई हाउस आ गया, तो माई कौन सी है, हमारी फर्स्ट कैटेगरी है पोजेसिव प्रोनाउंस की. लेकिन आपने इसको हल्का सा चेंज कर दिया, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है. अब जो प्रोनाउन है मेरा, उसके साथ जिस पे आप पोजेशन शो कर रहे हो वो नहीं आया, जिस पे आप पोजेशन शो कर रहे हो वो पहले आ गया, तो सेंटेंस में हम सेकंड कैटेगरी यूज करते हैं ऑलवेज. तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस हाउस इज माइन. क्लियर? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. यह तुम्हारी घड़ी है. अब आफ्टर तुम्हारी आपने क्या यूज कर लिया, घड़ी. तुम्हारी तो प्रोनाउन है, आपने उसके ऊपर जिसके ऊपर पोजेशन है आपका घड़ी, आपने वो वाला वर्ड यूज किया है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज योर वॉच. योर आ गया, ठीक है. नाउ इफ आई चेंज, तो फर्स्ट कैटेगरी आ गई योर. अब आई एम चेंजिंग द सेंटेंस, यह घड़ी तुम्हारी है. अब तुम्हारी जो है वो बिल्कुल अकेला आया है, उसके साथ घड़ी नहीं आई, घड़ी तो पहले आ गई, तो दिस वॉच इज योर्स, सेकेंड कैटेगरी. सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट, इफ यू जस्ट पे अटेंशन टू इट, कि कैसे हम रिकग्नाइज करते हैं कि कौन सा प्रोनाउन जो है पॉजिटिव प्रोनाउन की फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है या सेकेंड कैटेगरी में आ रहा है. होप इट इज क्लियर. तो दैट्स ऑल अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट वॉज पॉजिटिव प्रोनाउन. नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन or emphasizing pronoun. This pronoun is also called intensive pronoun. Okay, it is very interesting. See here, for example, the name is telling to us reflexive. First of all, आपको पता होना चाहिए कि what is the meaning of this pronoun. मतलब reflexive, emphasizing, intensive, इसका मतलब होता है खुद, अपने आप. यदि हम कुछ काम खुद करना चाहते हैं, जैसे मैं तो खुद बाजार जाऊंगा, I will go to market myself. तो खुद, जहाँ पर भी खुद वर्ड आ गया ना, बस इसका मतलब क्या है, वो कौन से प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस हैं. जैसे कि शी विल डू ऑल द वर्क हरसेल्फ, माई ब्रदर सॉल्व्स ऑल द पजल्स हिमसेल्फ, एंड सो ऑन. सो वी हैव so many sentences like this. Okay, but only difference is that reflexive pronouns भी वो रेफर बैक करता है सब्जेक्ट को, जैसे कि वह यह काम खुद करेगा, he will do this work himself. तो himself जो है वर्ब के बाद आया है और he को रेफर कर रहा है जो सब्जेक्ट है, इस वक्त सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. लेकिन वह खुद ये काम करेगा, तो खुद को हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद लगा दिया, he himself will do this. himself जो है it is emphasized by the subject. Okay, so it is emphasizing pronoun, या इनको intensive pronouns भी कहते हैं. Hope it is clear to you. बस one thing you have to keep it in your mind, if you are using you, तो it can be yourself also if you are talking about single person. If you are talking about a group, तो yourselves, self के साथ उसका plural form use होगा selves. They themselves, she herself. मतलब the identification, how would you recognize it? Self is added to the personal pronouns. Okay, whenever you see self, himself, herself, yourself, then it means it is reflexive pronoun or emphasizing or intensive pronoun. Now next is indefinite pronouns. Alright, so what is the definition of indefinite pronouns? When a pronoun does not refer to a particular person or thing, but refers to persons and things in general, not in a definite way, it is called indefinite pronoun. So we are having so many words, all, some, many, one, few, others, somebody, everyone, everybody, nobody. These all are the examples of indefinite pronouns. How to use that I am explaining to you.
Suppose I enter the class and I find all the students making noise. So should I take everybody's name and say Ramesh stand up, Neha stand up, Meena stand up, Sheila stand up, Rehan stand up, Kashvi stand up? Should I take everybody's name? Or should I choose one particular word which will substitute all the names together? क्यों ना मैं कोई ऐसा वर्ड ढूंढूं जो मेरा पर्पज ही सॉल्व कर दे, मैं सबको ही एक साथ खड़ा कर दूं और देयर शुडंट बी एनी नीड ऑफ टेकिंग एवरीबडीज नेम. तो आई कैन से ना ऑल ऑफ यू जस्ट स्टैंड अप. सो आई हैव टेकन द वर्ड ऑल, ALL all, and this word has substituted the names of all the students in the class, and it is a indefinite pronoun. Similarly, there are other words also. Okay, if I want to say कि in my class there are 45 children and no one does the work, so should I again take the name of everyone, or should I use a simple word कि nobody in my class does the work? So nobody I have used, it is indefinite pronoun because it is not taking everybody's name. जो हम निश्चित रूप से किसी चीज़ का नाम नहीं बताते तो उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. एंड दिस प्रोनाउन इन हिंदी वी कॉल इट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो आप पढ़ते भी हो. ओके, सिमिलरली मैनी, अगर मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर देयर, दे कम विदाउट होमवर्क, अगेन मैनी आई कैन यूज. रादर टेकिंग एवरीबडीज नेम, आई एम टेलिंग टू समबडी एल्स कि इन माई सेक्शन देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, दे डू नॉट डू द वर्क प्रॉपरली. तो मैनी इज अगेन इंडेफिनिट प्रोनाउन. अगर मान लीजिए आप घर में हैं और कोई आपको बाहर से कोई आया है, यू डोंट नो द नेम, आप कह सकते हो ना somebody has come mama, just go and check at the gate. Somebody has come. तो somebody again indefinite pronouns. Is it clear? So there are words. You have to keep it in your mind कि the words which refer to persons and things in general but not in a definite way, इनको बोलते हैं indefinite pronouns. Clear? Now next is distributive pronouns. As the name is telling, the pronouns that refer to one thing at a time are called distributed pronouns. You know the words each, neither and either. They are distributive pronouns. These pronouns are always followed by the verb in singular. Okay, for example, what is the meaning of each? जैसे कि each of the students is waiting for the result. Neither of them went to the party, मतलब उनमें से पार्टी में कोई भी नहीं गया. Either of you can take it, आप में से कोई भी इसको ले सकता है. Either is used for positive, neither for negative, and each for everyone. Now I am giving you one example first. Okay, suppose you go to market with your parents and your parents ask you to choose one dress. Okay, now the shopkeeper shows two dresses. So your mother says, okay beta, take this one or this one. Means you can take either this one or this one. या तो तुम ये ले लो या तुम ये ले लो. बट बच्चे तो बच्चे ही होते हैं. अब तुम क्या कहते हो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो दोनों ही लूँगी. आई वॉन्ट मम्मा बोथ द ड्रेस, एंड यू स्टार्ट क्राइंग. आप जिद करने लग जाते हो. अगर बच्चे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स भी तो पेरेंट्स होते हैं ना. फिर पेरेंट्स गुस्से में क्या कहते हैं, ऑल राइट, नाउ यू विल टेक नीदर दिस वन नॉट डेट वन. अब तुमको ना तो ये मिलेगी और ना वो मिलेगी. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? ईदर इज यूज फॉर पॉजिटिव सेंस कि हाँ, या तो ये काम कर लो या वो काम कर लो. और नीदर फॉर नेगेटिव, नो, ना तो तुम्हें ये मिलेगा और ना तो तुमको वो मिलेगा. नीदर एंड नोर, both of them they come together, either or come together. Okay, so other examples are you can either drink tea or coffee. She can neither see TV nor play. Each of us bought the book. हम में से हर किसी ने बुक खरीदी. Give the chocolates to each. ये चॉकलेट सब में बांट दो. Each मतलब प्रत्येक, each one, everybody should get, nobody should be missed out. So each, neither and either, they are distributive pronouns. Well, the next type is demonstrative pronouns. Well, as the name is telling to us, these pronouns, they demonstrate. Demonstrate means they point out the person, things or places. So they are called demonstrative pronouns. For example, this, that, these and those, they are called demonstrative pronouns. They can be in singular form or plural form. For example, this and that, they are singular form. These and those are plural. This का plural है these, and that का those. For the things which are close to us, near to us, उनके लिए हम क्या use करते हैं, this. जैसे कि this is an apple
and suppose at a distance you see the apple, so you can say that is an apple. Alright, similarly this का plural क्या है? These. आपके पास बहुत सारे apples हैं. These are apples and you see the apples at the distance, so you can say those are apples. So those and that, they are used to point out the things at a distance, and this and these, they tell us about the things which are close to us, near us. That is a boy. This is a girl. These are beautiful buildings. Those are beautiful buildings. मतलब those buildings are at a distance. Is it clear? It is called demonstrative pronoun. Well, the next is interrogative pronoun. As the name is telling to us, interrogation means question. Okay, so the words like who, whom, whose, which and what, they are used to ask questions, and they are all interrogative pronouns. Alright, let us do with the examples one by one. Number one, what? What is used to ask about people, animal or things? जैसे what do you wear in school? Okay, what Amri is doing? What is your ambition? What have you collected? And so on. Now next word is which. Which, this word is used to ask about things. Which is your bag? ठीक है, which book do you want? Which car do you like? And so on. Then whom, WHOM. It is used for people. Whom are you waiting for? Whom did you meet at the shop? Whom did you call? HOW, how. It is used to ask about things and people. How do you go to school? How did he escape from the fire? How big is Siti's house? And so on. So all the words, they are used to ask questions. Now next is when. It is used to ask about time. When is your birthday? When sports day will come? When will the concert start? And so on. The next is who. WHO, who. It is used to ask about people. जैसे who is the boy wearing the green shirt? And so on. Is it clear? So all these question words, they are in the category of interrogative pronouns. Clear? Now the last type is relative pronoun. Before I teach you relative pronoun, I would like to say we have all the same words like who, whom, whose, which, what. These all the words which we had used in interrogative pronouns, they are also relative pronouns, but they are used in a different way, and that is what I am going to teach you. So last kind is relative pronoun. So as the name is telling to us, relation, they relate. So the pronouns which join two sentences and refer back to nouns, they are called relative pronouns. They are used in place of noun or pronoun. Okay beta, they take the place of noun or pronoun. The words who, whom, whose, which and that, they are used for joining the sentences. We will do them with the help of examples, so you will understand in a better way. Okay. Now WHO, who is used for persons only. Okay. It may refer to a singular or plural noun. जैसे कि the man who is honest is trusted. Here I have used who. The man who. तो who I am using for whom? Man. मैं man के लिए who को यूज कर रही हूँ ना, तो who is referring back to the noun. Noun से relate है ना who, तो it is relative pronoun. Here it is, see the difference you should know. Who is that man? Question आ गया, वो तो interrogative हो गया. लेकिन I am saying the man who is honest is trusted, तो ये हो गया कौन सा pronoun? Relative pronoun. Then the boys who work hard are liked by their teachers. यहाँ पर who again boys के लिए यूज हुआ है. Clear? Now next is whose, WHOSE, whose. Whose, it is used in speaking of persons. जैसे we met the woman whose child was hurt. तो हम किसके बच्चे की बात कर रहे हैं? whose child, woman के. तो जो whose है वो किसको रेफर कर रहा है? woman को, woman के लिए आया है, तो ये woman से relate हो रहा है, इसीलिए it is called relative pronoun. Is it clear बेटा? Similarly, next is whom, WHOM. It is also used in speaking of persons. This is the juggler whom we met yesterday. Now whom is referring back to the noun juggler, तो it is relative pronoun. whom मतलब this is a juggler. juggler मतलब जो हमें ट्रिक्स शो करता है कि हम ये वही juggler है जिससे हम कल मिले थे, तो whom
जगलर के लिए आया, इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज विच, इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स. ऑलराइट, जैसे दीज आर द बुक्स विच शी बॉट यस्टरडे, तो विच इज़ यूज फॉर बुक्स, है ना. तो रिलेशन शो कर रहा है विच बुक्स के लिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज दैट, इट इज़ यूज फॉर पर्सन्स और थिंग्स. जैसे द कैट किल्ड द रैट दैट एट द कॉर्न, मतलब बिल्ली ने उस चूहे को खा लिया जिसने कॉर्न खा लिया था. ओके, तो द कैट किल्ड द रैट दैट. अब दिस दैट हैज़ कम फॉर हुम, रैट, मतलब वो चूहा जिसने चूहे के लिए आया, तो दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन हियर. ऑलराइट, आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी, तो दैट किसके लिए आया है, वॉच के लिए. इट इज रेफरिंग बैक टू द नाउन, सो इट इज रिलेटिव प्रोनाउन. आई होप इट इज क्लियर, है ना. इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग द सेंटेंसेज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू कैन सी फ्यू सेंटेंसेज रिटन हियर. जैसे फर्स्ट पार्ट इज what is the name of the boy, question mark, he telephoned you. Now there are two sentences, let us make one sentence. What is the name of the boy who telephoned you? Now who is referring to the boy. Okay, so now it has become one sentence. Second sentence देखो, they are the people, full stop, they are offering Sue a job. Here we can write, they are the people who are offering Sue a job. See the next sentence, that is the woman, she works in the post office. We can write this way also, that's the woman who works in the post office. Please give me the keys, they are on the table. Please give me the keys which are on the table. So there are few sentences, so hope you have understood relative pronouns. So don't confuse relative pronouns with interrogative pronouns. Alright beta, with this our topic pronouns is over. Hope I could make it clear. There should not be any doubts. In case of any doubt, you can ask any question in the comment box. It will be answered definitely. Your questions are always welcome. Okay, if you have understood, don't forget to like, subscribe and share with your friends. That's all in this video. Okay, all the best. See you in the next class with some new topic. Bye.